और आई थिंक ये बहुत सैड है कि हमारे बच्चे आजकल वीडियो देखते हैं दूसरे बच्चों के खेलने का। ऐसा स्कूल नहीं होना चाहिए जो बच्चों को ये एहसास दिलाए कि तुम बेवकूफ हो। How to say no to her. So what more can I do so that whatever time she has is best utilized? It is a very dangerous thought. So why should a 4-year-old sit on the chair and eat? She to roam around. Huh? Thank you for coming today. How old is your daughter? 4 years, 3 months. 4 years, 3 months. How is it going? Great. Great. You enjoy the time? Yeah. Yeah. Very good. So no moments of despair, no moments of anger, no moments of I was more being sarcastic saying it's no, it is going great for sure. तो बताइए किस बारे में बात करना चाहते हैं? I have a different. I do not have any complaints or issues. God has been kind, and she's a very energetic child. See, like how children should be. Yeah. So I was looking for ideas and thoughts on how to channelize energy. Right. So we started with two things. First, when she was about to be 2 years, she's an outgoing person, outdoor, and also we genuinely put her into a play school so that she actually loves playing with more children and books. And moment she entered the play school, she was very happy. And that slowly transitioned into her Montessori. And there it's like, oh, I'm going to big school. Now it is more, I'm going to bigger school with. So she's happy about it. Oh. उसको मजा आ रहा है. So all that's a good sign. That's what we started getting her involved into gymnastics. So that the idea is you listen to the teacher as well as do some physical. 4 साल की है ना? Yes. हाँ. And also a little bit of dance and all. So these are some of the things which are closer, easier accessible for us. Going forward, looking for more like plan it in a manner or some ideas where you could actually channelize which has both mental and physical development, and then you build upon it as you grow is something. तो आई थिंक नहीं, आई थिंक ये सवाल है जो हर एवरी पेरेंट thinks about their child, right? Because you want to do the best for children. So what more can I do so that whatever time she has is best utilized? It is a very dangerous thought because this thought can put constant stress on the parent to say I want to do the best. It's not putting any stress. It's just that you're more proactive in your approach to identify things, looking at her responses on how she's doing in the dance or how she's doing in gymnastics. So he enjoys going to gymnastics. Oh, she enjoys gymnastics. She can do swimming. She went to the pool when she was barely 2 years. आपको कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं, जेन्युइनली। मैंने बहुत समय गँवाया है अपनी ज़िंदगी में अपने बेटी के साथ सोचते हुए कि नेक्स्ट क्या? और आप शायद मानो, शायद नहीं मानो, लेकिन जब हम ये सोचते रहते हैं, तो जब हमारी बेटी जिम्नास्टिक्स कर रही होती है, जो हमारी बेटी जिम्नास्टिक्स कर रही है या जो कर रही है वो कर रही है, उस मोमेंट पे हम प्रेज़ेंट थोड़ा कम होते हैं। हम क्योंकि आगे के बारे में सोच रहे हैं। एंड आई एट लीस्ट पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू जेन्युइनली ट्राई टू सी माय चाइल्ड प्लेइंग। वरना जनरली मैंने देखा है कि मैं वो अगर खेल रही है बास्केटबॉल मेरी बेटी, तो मैं सोच कुछ और रहा हूँ, चाहे उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। तो आई ट्राई टू बी मोर प्रेज़ेंट बिकॉज़ दैट इज़ व्हेन इट जेन्युइनली बिकम्स रियल फॉर मी। तो लाइक यू सेड, आपको क्वेश्चन सही डायरेक्शन में है, मैं बोल रहा हूँ आपको एक्चुअली करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। व्हेनेवर वी आर विद द चाइल्ड टू समहाउ बी प्रेज़ेंट Yeah, I get that. वर्सेस थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर। I will. एंड ज़रूरी है फ्यूचर के बारे में सोचना, लेकिन 90% प्रेज़ेंट, 10% फ्यूचर। मेरा खुद का 30% फ्यूचर, 70% प्रेज़ेंट रहता है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पेरेंट्स स्पेंड 70% फ्यूचर, 30% प्रेज़ेंट, दैट इज़ वन। और जो आपने पूछा उसमें मेरा विश्वास ये है कि इस एज में बच्चों को इवन टिल द एज ऑफ 12 इन सम वे, वेरी रेयर चिल्ड्रन से आई विल पिक दिस वन थिंग एंड बिकम वेरी गुड एट दिस। वेरी फ्यू, इन द सेंस ऑफ इफ यू फील जिम्नास्टिक्स में वर्ल्ड क्लास बन जाए, टैलेंट बन जाए, वो एनवायरनमेंट क्यूरेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। उसको क्यूरेट करना इस हिसाब से कि बच्चे को प्यार भी हो और उसको फोर्स भी ना लगे, इज़ अ वेरी वेरी हार्ड। वो एंड्रो अगासी वाली रील देख ली थी, अच्छा उसके बाद बहुत बढ़िया, वो छोड़ दिए, वो 4 छोड़ दिए आप पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे अभी इट इज फन, इट इज एंजॉयमेंट, इट इज चैनलाइजिंग एनर्जी,
तो आई वांट अदर पेरेंट्स टू हियर दिस. आई थिंक दिस इज जेन्युइनली ब्यूटीफुल कि बेटी कुछ टाइम पास कर रही है और आप उस टाइम पास से खुश हैं. आई थिंक जितना वो लिविंग थिंग्स के आसपास रहे उतना आई फेल्ट इट नाइसर फॉर चिल्ड्रन. उसका मैं भी ध्यान रख सके थोड़ा तो अच्छा है, बट बाकी तो फर्स्ट क्लास है. नहीं, बट उसके बाद एक और भी. यहाँ बताइए. Maybe it is too far-fetched, right? Hmm. Maybe it is more of I'm self-confident. I'll be able to manage as I grow. So you do certain things at early age so that you can build upon as you grow. And by the time you're in the real world, right? It is a mixed bag, and you're ready to face The world. the world. My only struggle is how to say no to her. Hmm. Because everything is good about her. Perfect. She's a very happy-go-lucky child. Hmm. And The truth. yes, and being around her is the best thing which has ever happened to us. But she's not able to take the word no. Hmm. Be it from us, be it in the school at times, in her dance, gymnastics, everything was fine. But then the no, I mean, she doesn't like to be instructed more, and she doesn't like the word no. I mean, I admit that I do get a little hyper on her because it becomes very repetitive, me telling her no, and she will not listen. Nitya, नहीं करो, या ये चीज़ छोड़ दो, ये वो, हम फिर भी वो करेंगे. Not listening to the teachers at times. So, वो एक rift रहता है मेरे Let's forget the teachers. Let's talk only about you. about us only. So, Hmm. घर पे कोई भी any small thing, if I would say, Nitya, don't do it. Like, give me, what is that small thing? I would say my reading of that is she is doing no because she wants to sit. Not that she doesn't want to listen. She wants to know how she wants to have fun. तो मम्मा ने बोला तो नहीं. मतलब वो करना है, मस्ती करनी. ऐसी करनी है, but ये है कि more rebellious kind of a thing with me, and she's Easy going with it. easy going with him, and he's also easy going with her to some extent. That's So- father so- daughter kind of. So you say no less to her. Yes. Yeah, because I don't feel the need to say no. to. So that is why we. अच्छा, तो why don't you tell us when does she say no? There are small things where I think she's saying no is right. And I just यहाँ भी आप कैमरा पे ऐसा बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है. नहीं. हाँ. What happens when you say no? Like in what? हम जो खाना खा रहे, She is running around. हाँ. I have to like, Nitya, take a bite. Nitya, take a bite. She move around all the sofas, jumping around and then moving. And then she knows that I'm getting irritated, but she'll still, do what she wants to do. And eventually, आएगी, नहीं आएगी, and then that bite will go in her mouth. But she will not sit on the chair and eat food. So why should a 4-year-old sit on the chair and eat? She will roam around. Like मैं तो सिर्फ उसमें दिक्कत क्या लग रही है आपको? Eventually तो बैठेगी. But अगर अभी से ही इसको बताएंगे कि she needs to sit on तो the आगे chair, क्या लगता है? everybody's ओह, safe. बहुत So, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. तो आपको लगता है कि अगर आपने अभी उसको बैठ के खाना खिलाना नहीं सिखाया तो पूरी जिंदगी वो सोफे पे जंप मार के खाना खाएगी. ऐसा नहीं है, बट अगर जैसे अभी आप बोल रहे थे कि अगर अभी आपने जो पुराने पहले कपल जो आए थे कि अगर उसको गुस्सा आएगा तो वो बाद में क्या वो टीवी ऑन करके वो अपना बट अभी गुस्सा नहीं आ रहा ना. गुस्सा नहीं है, बट वो है कि अगर अभी से उसको नहीं बताया, दिस इज दिस लिटिल manners or table etiquette, I would say, कि हाँ, you sit, everybody is sitting, no, mama is sitting, papa is sitting, daddy is sitting, so we also sit on the table and we all enjoy the meal together instead of like I'm having one bite and I'm calling Nitya. आप मत बुलाओ. जितना प्यार से बुला सकते हो उतना बुला लो. उसको 4 साल की तो हो गई है. 4 साल के बच्चे के लिए बैठना मुश्किल है. जितना हम बैठ गए इतना तो पूरे दिन में नहीं बैठा जाता उनसे. जितना वो जंप मारते हैं उतना हम जंप मार लें अपना. एक जगह नहीं टिक कर बैठ सकते. नहीं, बिल्कुल ठीक है ना. तो सब बच्चे ऐसे ही होते हैं. आप बैठ के घर पे खाना खा रहे हैं, कितने लोग? 3 3 3.5 3.5 है ना. My mother. आप उसकी चेयर लगा दीजिए वो नहीं. तो ठीक है, तो ना बैठे. बीच में अगर आपका दिल करे खुशी खुशी आप खाना खिला सकते हैं तो खिला दीजिए. अगर नहीं खिला सकते तो उसको बता दीजिए कि ये खाना उड़ जाएगा, ठीक है ना, और फिर नहीं मिलेगा शाम तक. ये कर सकते हैं. वरना उसको बोल सकते हैं खाना रखा हुआ है, ठंडा भी हो गया, जब खाना हो जितना खाना हो खा लेना. आप करो उसको जितना खाना होगा जब मार के खा लेगी. हमारे बच्चे क्या है कि जानवर है ना, भूखे नहीं मर सकते. they will eventually eat because They didn't know that food. They would say that they'll be hungry and then they want nothing else to be. that is true. वो आपको मना करना है.
ये मना करना विद लव इज द बिगेस्ट। और पता है क्या, मुझे क्या लगता है, मैं पहले भी जो बता रहा था कि हम पहले तो बहुत जेंटल होने का नौटंकी करते हैं। हम जेंटल है नहीं, हमारे अंदर से पारा बढ़ रहा है, 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 जेंटल है नहीं हम, आउटवर्डली जेंटल हैं खाली, और फिर फट जाता है बम बूम। How to be a calm parent? हाँ, How to be a calm parent? Because she does. I mean, she's, as you said, she is naughty. So with her naughtiness, I do, get hype, worked up too much and too early. 3 काम है उसमें जो मुझे समझ में आया अभी तक। 1 इज़ के नो बोलना कम करना पड़ेगा। इस पर करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। जिन बातों के लिए नो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए उसको टेंशन और खुद को टेंशन क्यों देनी है? यू नो व्हाई बॉयल आवर ब्लड एंड हर ब्लड ओवर इट? उसका तो वैसे भी उबल नहीं रहा, आप ही का उबल रहा है। द सेकंड इज़ अंडरस्टैंड चिल्ड्रन मोर। I said the more we understand that a 4-year-old actually should not sit at a table and eat. And the third genuinely is mindfulness. हम लभ्य के ऑफिस में, you know, they teach mindfulness to 2 million kids across India. Being able to meditate, sit calmly, if you can find 30 minutes to do that for yourself, lot of things will change for you in your life. Like, you know, Vipassana, inner engineering, other so many meditation techniques are available. कोई भी पिक कर लीजिए जो आपको पसंद आ जाएगा. And get 30 minutes with yourself. Genuinely our world has become noisy. इतना वो ज़्यादा रील, ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा चीज़ें, आवाज़। I think sitting with oneself for 30 minutes daily with our eyes closed has the capacity to change the world. तो वो तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। Definitely the capacity to solve for what you want to solve for. Guarantee है। But mainly a child who refuses for no is a child who's generally being said no too often. Also, that no has lost its meaning because the no isn't put into action. कोई, for example, अगर एक बच्चा, if the child doesn't know swimming and they are close to a deep swimming pool, you will say no. They don't listen, you will go, you'll grab the child and bring them to safety, irrespective of whether they cry, not cry. We don't have to be afraid of a child crying. We will do that. Either the child will listen or we will do that. We will not weekly keep saying no beta mat karo, no beta mat karo, no beta mat karo, because it has no meaning, right? So वो आप कम कर लो थोड़ा. Does this help? कि नहीं? Yeah. कि आप hope करके आए थे कि I will tell you how the child will be able to sit at a table and eat. No, the magic bullet, silver bullet of how to make no work. वो सोच के आया. Actually उसका आंसर है, how to make no work is to say no less often, and when you say it, mean it. कम बोलो, लेकिन जब बोलो मना करो तो उसको पूरा इम्प्लीमेंट करो। उसके लिए फिर बच्चा रोए ना रोए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही चीज के लिए मना करें और इम्प्लीमेंट करें। No, and it's not that we have not done it, and it just collaborates to the digital detox. So it's not that we don't have time for her, but we thought that that's another way of picking up information and learning. We don't have any television. I mean, we don't see any television, but for whatever story, cartoon, keyboard cartoon. What is her mobile time? No. So she used to have 3-4 hours, and we thought she was picking up things. She was learning things, and we thought that was normal and it was okay. And we did not get any negative feedback from the schoolers. But last October or something, we heard that she's not listening. When we got that feedback, and Nitya was also aware that this is the feedback because she'd been told, "Mama, Papa ko bolte ki." We knew what to do. We stopped television. Zero. Zero. Very good. 2 months, 3 months. The teacher came back and said, amazing. Amazing. And The only child who listens now is Mithil. So you know what you have to do? You have to ensure other parents in the class understand this. No, I give this example to my friends. They don't believe it, but then I said it has happened. You can cross check with the teachers. And now there's no craving also. There's no craving. She's saying, "Mama, TV की जगह मैं और कुछ कर सकती In that, by the way, you are lucky. Little bit. Yeah. But again, do touch wood. That doesn't happen often. Because we thought that probably this is the right age where she will take that
no seriously, and we'll be able to control it. And after that, it is मैं तो बोलता हूँ if somebody's child is 10 and has got into mobile at any age, when a child has got caught up in mobile, it is the parent's responsibility to say no and mean it. I think what you have done is absolutely wonderful, and I think a lot of parents get into this because of thinking कि मोबाइल से मेरा बच्चा कुछ सीखेगा, और सीखता है, लेकिन जो सीखता है वो यूज़फुल नहीं है, और उसके साथ में जो बाकी का हार्म आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली वो यूजफुल भी हो सकता है सम एक्सटेंट तक, बट वो इतना एनग्रॉस हो जाते हैं बाकी चीजें, इट टेक्स नहीं, दैट अवे फ्रॉम मैं कह रहा हूँ, मैं इस बात को एड्रेस करना चाहता हूँ कि बच्चा अगर उससे राइम्स और इंग्लिश या कुछ भी ऐसा सीखे, वो यूज़फुल भी नहीं है। आई वांट टू गो बैक टू दिस एग्जांपल एंड से कि इस छोटी उम्र में हम सिर्फ करने से सीखते हैं। बच्चा जितना मेंटल सीखेगा, उतना कम अच्छा है। करने से, जैसे मॉन्टेसरी में अल्फाबेट्स दे आस्क देम टू डू इन सैंड, बिकॉज़ ये किया, स्क्रीन पे ए देखा, मैं ए कुछ कर रहा हूँ, वो थोड़ा, दैट इज़ नॉट द बिहेवियर वी वांट इन आवर चाइल्ड। तो हमें लगता है बच्चा सीख रहा है, लेकिन जो सीख रहा है इज़ मेंटल। बच्चे सिर्फ करने से सीखते हैं, और आई थिंक ये बहुत सैड है कि हमारे बच्चे आजकल वीडियो देखते हैं दूसरे बच्चों के खेलने का, राइट? दैट इज़ अ वेरी कॉमन यूट्यूब videos where other children are playing with dolls and ABCD and children are watching. We want our child to play, not watch other people play. education in the past was in a very different way, but now with technology and awareness, and it is I think there must be some way to plan it or do it by design rather than leave it to chance. Make our children capable by design, is what you're saying, right? Yeah, whether we are there or not there, we will. तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, which I think is by design, but it is not the kind of example that I think you're looking for, but मुझे लगता है वो सही एग्जांपल है, which is कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे दो बच्चे इसको लेके बाहर जा रहे थे, राइट? एंड somebody said, मत उठाओ, तुम गिरा दोगे, मुझे दे दो। तो मुझे लगता है कि फ्रीडम फॉर एग्जांपल या कैपेबिलिटी हम बच्चों को दे नहीं सकते, उनसे ले सकते हैं। फ्रीडम दे नहीं सकते, उनसे खाली चुराई जा सकती है। सिमिलरली, इफ वी जस्ट लेट किड्स इन दिस एज जस्ट डू थिंग्स दैट दे वांट टू डू, 100% automatically capability and confidence will get built. Like, I cannot imagine a scenario based on what I've read, researched or seen in which it doesn't get built. बस बच्चों को जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उससे रोकना नहीं है और करने देना है। लाइक स्कूल के मामले में मुझे लगता है कि यार हर तरह का स्कूल ओके, बट ऐसा स्कूल नहीं होना चाहिए जो बच्चों को ये एहसास दिलाए कि तुम बेवकूफ हो। Yeah, that was one of the reasons we were very careful कि जो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो एजुकेशन से वो कहीं सप्रेस ना हो जाए. We were very clear on that. और नेचुरल इंस्टिंक्ट का ना नाम, मैं सोचूं नेचुरल इंस्टिंक्ट ना कई बार हम मैं कंफ्यूज हो जाते हैं। आई थिंक द थिंग इज क्यूरियोसिटी टू लर्न, Or be yourself and behave and then क्यूरियोसिटी टू, please. बिकॉज बच्चा जब इसको उठा रहा है, या इवन इफ अ चाइल्ड इज चाइल्ड ऑफ हर एज, इफ दे डूइंग समथिंग, इट इज वेरी लेस अबाउट थिंकिंग एंड देन डूइंग, इट इज जस्ट इंस्टिंक्ट परस्यूइंग देयर क्यूरियोसिटी। और उसमें आई थिंक एक डिफरेंशिएशन विच इज के, क्योंकि बच्चे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं, तो अगर 4 साल का बच्चा बोले मुझे मेकअप लगाना है, तो वो क्यूरियोसिटी हमें ख़त्म करनी है, उसको मना करना है। वो क्यूरियोसिटी आई है क्योंकि हमारे बच्चे बंदर हैं, वो बाकी सबको देख रहे हैं। But on the flip side, maybe they are much more aware and then they're much more advanced than their age because of the sense, because of the information available. हमारे बच्चे ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं मेंटली, लेकिन माय बिलीफ इज़ वी ओनली बिकम स्मार्ट बाय डूइंग। करने में स्मार्टनेस है, सोचने में ओवर टाइम मेंटल इलनेस है, खाली सोचने में। और हमारे बच्चे पहले से ज़्यादा सोच भी रहे हैं, राइट? लाइक आई वाज़ सेइंग टू यू के लाइक ये बच्चे को अगर ये उ उठाया उसने और यहाँ से वहाँ ले गया, इससे ज़्यादा बड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बिल्डिंग एक्सरसाइज मुझे पता ही नहीं बच्चे के लिए। जो बच्चा आज इसको यहाँ से वहाँ लेके जा रहा है और कुछ और कर रहा है, कल को वो कंपनी भी शुरू कर सकता है, क्योंकि उसको आस-पास वाले बोलते हैं हाँ, तुम कर सकते हो, किसी ने रोका नहीं। Yeah, I agree. Yeah. And that is what I thought was कि you create scenarios where you get the child to take action on whatever information, sensory inputs she would have gathered.
so that she can then start to apply and बिल्कुल ठीक on है, it. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो सिनेरियो 2 चीज़ें, एक मेरी बेटी मुझे लगता है कि उसको मोर सिनेरियो चाहिए जहाँ पे वो अकेले जाके काम कर सके, तो मैं वो सिनेरियो क्रिएट करूँगा अगर मुझे कोई इन्हिबिशन दिख रहा है तो मैं दिमाग लगाऊँगा क्रिएट करने के लिए। अगर मुझे दिख रहा है कि सब ठीक है तो नॉर्मल सिनेरियोज़ लाइक पिकिंग अप दिस कटोरी तो चलते ही रहते हैं, पूरा दिन सिनेरियो ही सिनेरियो हो रहे हैं। मतलब घर में सिनेरियो ही तो बना हुआ है हमारे। सो सिनेरियोज़ आर हैपनिंग ऑल द टाइम इन आवर हाउस। जेन्युइनली एट दैट एज आपको कुछ एक्स्ट्रा सिनेरियो क्रिएट करने का ज़रूरत ही नहीं। सो लाइक माँ-बाप से के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है घर पे, एवरीवेयर इज़ एन एक्सपेरिमेंट। सो यू डोंट नीड टू क्रिएट एक्स्ट्रा सिनेरियोज़ इज़ व्हाट आई थिंक अनलेस आपको लगता है कोई दिक्कत है। नहीं, दिक्कत की बात नहीं होती है, because it's a multifaceted world. हुँ। You may be able to touch upon some aspects, and the real world scenarios will be very different. I'll give you an example of one video that I saw about a lady who's a army officer's daughter. She wanted to go to college. तो आपने बोला जाओ. She had no clue. She बोला बस से टिकट लो जाओ, figure out admission लो. And that was the लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर हर। for her. She actually did it, and now she reflects back and says that it was more of their confidence than on mine, because they let me or allowed me to do certain things. You know, think about this, that she felt that confidence at the age of maybe 18. Yeah. The thing you said, which she said, which is children are born with curiosity. They are not born with confidence. Confidence, another word which I love is capability to deal with different situations, different types, is built by doing. As parents, we can allow. When we allow children to do, they build capability. And I think this confidence also is misunderstood. For example, one of my friends is not confident about jumping from this table down. He doesn't have the confidence, right? But he's very confident in talking to people. My fitness coach will jump from double this height, but can't communicate in front of lot number of people. So I think it's about building capability, which is about allowing the child to do. अगर उतना हम as parent कर रहे हैं, it is enough. हमारा केस में थोड़ा वो हो जाता है कि कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा. I put her in a pool and she's already telling me you go, तो as if she knows how to swim. टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन सेफ्टी, वो तो हमारा काम है ही है, तो इसीलिए रखा है भगवान ने हमको। At some point you get influenced from outside also. It may not go with your values and your style of living. How do you deal with that? In a visual world, our child will only pick the good things from others or the things we consider good from others and not pick the others. The truth is, children are not that way. Neither are we. If we spend time with somebody, we pick all sides of that person. So I think if a child brings home something which you don't approve of, is not in sync with your family values, you tell that clearly to the child and you say no with love. For example, if it is a word, it's a kutta, and you say in this house we will not use that word. As simple as that. Be very clear, be very direct. That is what we can do as parents. I think the missing point here is when a lot of time parents say I'm doing it but it is not working, is about who is the child attached to. Many parents today are not spending enough time with their children when they're young. So the child is more attached to younger kids, peers outside. Hence, what peers do has more impact on the child than the parent saying no. Which is why, for young kids, loving adults to spend a lot of time with the child is important. So that बच्चा उनकी बात सुने. That I think that is what is vanishing from our society. Which is why children are not listening to parents. What is the way of joining your community group? Because I did share this group with couple of my friends. And आपको 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक WhatsApp पे मैसेज किया था, how any link to join your group. No, so anybody who takes a course joins the group. हाँ, that's what you meant. Yes. So course, So because the idea is to have parents who have at least certain sensibility, they've taken out certain time. Because if a parent otherwise comes and joins and starts asking the basic question. So now there are two courses. One is understanding your child and one is how to select a school for your child. I thought master class. What was the master class? There was a The master. master class is understanding your child. Okay.
and then I made another course called How to Select the Right School for Your Child. नहीं वो बच्चा ही अपने आप एडमिशन ले आया, बहुत बढ़िया। की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे हमारे को भी वो लगा कि अच्छा ठीक है, स्कूल ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया है। So anybody who sees these courses, then can join the community group. Yeah. Yes. Thank you so much for coming here. अपने बच्चे के लिए समय निकाला. You traveled all the way here. I'm very thankful for that. Not many parents do that. So thanks a lot for taking out time. Thank you. Good to chat with you.